Good morning, everyone. Last lecture, we learned about the microcomputer, block diagram, and its explanation. Along with, we did the study of bus structure. There are three types of bus: data, address, and control bus. Okay. Now, today we are going for understanding of the microprocessor 8085. Wait, now we are going to start microprocessor 8085. Now question arises here, why we are going to study microprocessor? So remember, हम यहाँ माइक्रोप्रोसेसर का स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसका जो जवाब रहेगा वह रहेगा हम ऑटोमेशन की तरफ टर्न कर रहे हैं. ऑटोमेशन में अगर आपको एंट्री करना है, आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज में एंट्री करना होगा, तो वहां पर ऑटोमेशन जरूरी रहेगा. और वो ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए वहां दो चीजें लगती हैं. फर्स्ट इज हार्डवेयर and second one is software. So that's why here I am telling you here both combination, software as well as hardware. Okay, so here the first microprocessor that I am introducing in your third year level of electronics and telecommunication engineering. Okay, so here remember, wait a minute. Okay, so here you are going to learn the first microprocessor of this world, that is microprocessor. This microprocessor was invented by Intel Corporation in 1970s to 80s decade. So when this microprocessor launched by the designer, then they have given a specific number. That number is 8085. Now question is, sir, why 8085 number is given to the microprocessor? So see, हम अभी तक डिजिटल फैमिली पढ़ते आए हैं. डिजिटल फंडामेंटल जो फैमिली है, वह फैमिली में आपने वहां पर 74 सीरीज देखे, बराबर. 74 सीरीज में आपने वहां पर डिजिटल आईसीस का यूज देखा. हर डिजिटल आईसी वहां पर आपने वहां पर लर्न किया, लाइक एंड, और, नॉट, एक्सऑर, अप टू एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक. तो डिजिटल सिस्टम डिजाइन एंड होता था आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के ऊपर. देन आफ्टरवर्ड देयर इज एन एक्सटेंशन. That extension is a microprocessor. So यह माइक्रोप्रोसेसर में जो फैमिली है, वह फैमिली की जो सीरीज स्टार्ट की गई, तो वह सीरीज का 2 डिजिट बताते हैं 80. तो 8085 में जो 80 है, वह 80 इंडिकेट करता है 1980s decade. So that's why the 80 is given by the designer. Similarly, the next two number are, first 8 is there, that is between 85, that is 8 is there, that 8 indicate the 8-bit microprocessor. The length of the bit handling length of the microprocessor is 8-bit. So that's why here the length is directly indicated by
the designer into this number. So that's why here it is called a 8-bit microprocessor. That's why the 8 is introduced. Then last 5 is given because here this was the first microprocessor of this world was working over plus 5-volt power supply. In earlier days, before that, before launching this microprocessor, the earlier processor was work over the 12-volt. But here the logic bit was introduced, and because of that, zeros and one, the 5-volt power supply is indicated in this number. So that's why here the number 8085 was given by the developers or designers. Now here we will see, now this is about the 8085 microprocessor that you know about. So now we go for the understanding of the definition of microprocessor. So see, microprocessor is a clock driven semiconductor device. It consists of electronic logic circuit manufactured by using either a large scale integration or very large scale integration technique. Okay, so remember here the microprocessor is a clock driven semiconductor, means it will work over the clocks, and as per application of clock, the operation of the internal things are get carried out. It is a semiconductor chip. It is available in the form of IC. It consists of a electronic logic circuit which is manufactured by either LSI or VLSI technique. Okay. Now, the microprocessor is capable of performing various computing function and making decision to change the sequence of program execution. So when you talk about the definition, that time the microprocessor is capable of performing various computing function. Okay, it has capability to carry out arithmetic, logical operation. So that's why here the word computing function is given. Okay. Similarly, it has making decision to change the sequence of execution or sequence of program execution. Okay. So that's why here the logical capability is present with this processor. So that's why here it will help you to change the sequence of execution of a program according to the instruction passed by you. Okay, so that's why this is a basic definition of a microprocessor. Remember, बोलते वक्त क्या बोलोगे? The microprocessor is capable of performing computational as well as decision making operation to change the sequence of execution of program, right? Now, in large computer, a central processing unit performs these computing functions. The microprocessor resemble a CPU exactly. Okay, the microprocessor is in many ways similar to CPU, but it includes all the logic circuitry, including the control unit and on-chip peripheral devices. The microprocessor can be divided into 3 segments. For the sake of clarity, they are arithmetic or logic unit, register array, and control unit. Okay.
A comparison diagram is shown below. Here you can able to look the CPU and microprocessor unit. The CPU carries a central unit is arithmetic logic unit and control unit. It is interface with input, memory and output devices. In the same fashion, the microprocessor unit is there. The microprocessor unit is a MPU. It is named as MPU, and again it is interface with input, memory and output. If you look, so someone will say that, sir, what is the difference? What is the difference between these two things? Remember, here a microprocessor and your computer unit will be very similar, though it is very similar. Okay, but here you can find the computer unit will carries only arithmetic and logic unit and control unit. Okay, but in terms of microprocessor unit, you can find the different sections which are available over the chip of the microprocessor. That unit are register unit, control unit, arithmetic and logic unit, similarly interrupt sections, communication like serial and parallel communications. These sections are present. Okay, so because of that, the microprocessor is somehow different than the computer unit. Got my point? Okay, now I'm telling you about the applications of microprocessor. Now see, here I listed few application along with their images. So microprocessor is a multi-use device which finds application in most of all field. Here is some sample applications given in variety of field like electronics. Okay, here you can be able to look. First application is digital clock. In front of you, a digital clock is given in the diagram. Okay. Similarly, watches, whatever the hand watch. Okay, you are utilizing that watches, wrist watches that you are utilizing, that are comes under the microprocessor application. Then mobile phones, whatever mobile phones, laptop, tab, desktops, everywhere. Similarly, whatever keyboards, mouse, scanner, printer, everything, it comes under the electronics. Okay, so that's why here different devices are there. Then measuring meters. Nowadays, measuring meters are most prominently adopted in our day-to-day life by our mechanical, civil engineer or electrical engineer. Question is, sir, where they are utilizing these measurement meter? See, nowadays, if you want to measure the distance between the two walls, the civil engineer immediately accept a distance measurement meter. Because of that, the distance measurement meter, you can able to find the distance between the two things. If a wall is there in front of you, then immediately if you switch on the meter, then you will see the distance between you and a wall. Means in earlier days, most of the civil engineer adopts tape. Okay, because of that, they can able to measure. But nowadays, that measuring is very smarter and easier. Similarly, the floor level maintaining point of view,
Now the mobile app which is available in your Play Store, that will be helping you, helping them, helping civil engineers, that you can able to measure the level of the floor. Okay, while tiling of your houses, the level meter is directly available in your Google Play, your Play Store. Okay, that you can download and you can run it. You can able to find where is the level. Okay, whether it is downing level or whether it is a constant horizontal level. Okay, so you can able to trace very easily. Similarly, the mechanical engineer are mostly adopting these measuring meters for flow, pressures, measurement point of view. Similarly, electrical engineers are utilizing a tachometer. Digital tachometer are available. Okay. Similarly, that tachometer are used for measurement of speed of a machine, whatever DC or AC machine. Okay, its speed, rotating speed, you can measure. Nowadays, that rotating speed of your vehicle is also digitized. So when you have a two-wheeler or four-wheeler, if you want to observe the speed, okay, then immediately you can see the indicator, digital indicator are there for showing the moving speed of your vehicle. As well as in your mobile also, there are some apps. These apps permits you to measure the walking distance, walking speed, whatever. अगर आप सवेरे मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करते होंगे, रनिंग करते होंगे, तो मॉर्निंग वॉक करते समय आप वहां पर हेल्थ ऐप डायरेक्टली अवेलेबल है, और वो हेल्थ ऐप के द्वारा आप डायरेक्टली वहां पर वॉकिंग या रनिंग स्पीड आप डेली काउंट कर सकते हो. उसमें आपको कैलोरी मीटर और एवरीथिंग विल बी गिवन. या मोबाइल में ना होते, अगर आपके पास मोबाइल अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली आपको मार्केट में इस तरह के मीटर भी अवेलेबल है. ओके, तो वह मीटर के द्वारा आप वहां ये पर्टिकुलर थिंग्स ऑब्जर्व मेजर कर सकते हो. इतना ही नहीं, अगर कोई अगर पूजा कर रहा है, कोई चैंटिंग कर रहा है, अगर मुझे राम 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 राम, मुझे कोई यहाँ पर पर्टिकुलरली चैंटिंग कर रहा हूं मैं, मुझे 1000 टाइम या 10,000 टाइम वो पर्टिकुलर एक मंत्र काउंट करना है, तो मुझे वहां काउंट करने के लिए वहां इस तरह के चैंटिंग मीटर भी आज अवेलेबल है. तो वो मीटर्स के द्वारा आप चैंटिंग काउंट कर सकते हो. राइट. सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसे मैकेनिकल एप्लीकेशंस है, लाइक ऑटोमोबाइल है, लेथ है, या ऑल रिमोट मशीन्स है. आपके सामने एक यहाँ पर फोर व्हीलर का एग्जांपल दिया है. मैं उसको यहाँ पर थोड़ा मैग्नीफाई करता हूं. कहा गया? हाँ, ओके. अरे लो, बेटा कुछ ठीक है. हाँ, ओके. सी, here you can able to see a four wheeler. Okay, in front of that, okay, here you can able to see a high beam control. Okay, similarly a radar fusion center or night vision. Okay, or front view camera system, or a side impact assets, or a blind spot directions. Many things are get introduced in your four wheeler or two wheeler for monitoring point of view. So that's why the driver is capable to handle each and everything very properly. Okay,
So that's why here these automobile applications are available. Similarly, in terms of medical patient monitoring system, so here in the side diagram, here you can able to look a patient monitoring system where a nurse is able to observe the patient's conditions. Okay, in different meters like ECG, EEG, EMG, okay, as well as many blood pressure, sugar level, okay, heart level, everything that will be measured with the help of these meters. Similarly, in terms of surgery monitorings point of view, if any doctor is going for surgery, then for atomized surgery point of view, here also different kind of meters are there for guiding the doctors. Okay. Similarly, you can able to watch a CT scan, okay, MRI. These machineries are available. Okay. Now their cost is in crores. Okay. So most of the places, most of the hospitals, electronics engineers are get deputed for the smooth handling of all these equipments. Okay. Similarly, data loggers are there. Data loggers means you can collect the data of our day-to-day life. Okay, whatever things which are happen, for example, earthquake monitoring or environmental monitoring system. Okay, so in that situation, you can able to watch, able to record the data of different places at a time. So that's why data loggers are there. Okay. Similarly, in terms of all accessories of our computer, laptop, modems, scanners, printers. Okay. Similarly, you can able to look use of microprocessor in our domestic application like microwave oven, television, now CD, DVD. Now they are obsoleted, but now they are in use. Okay. Similarly, washing machines. Okay. So these are various applications that I have shown in this peak. Okay. That application you can able to see. Okay. So these applications are always needed in our day-to-day life. So because of that, here you can able to survive. Okay, you can able to see the use of microprocessor. Okay, now I hope you got the idea of how and where the use of microprocessor. Okay, so these are the various applications that I tried to show you. Here the use of microprocessor is carried out. Okay, now I'm going to start the 8085 microprocessor basic study. So first of all, अगर हम कहीं अगर कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, एग्जाम्पल मुझे मोबाइल परचेस करना है, बराबर, अगर मोबाइल परचेस करना है तो आप उसमें क्या करोगे, पहले मार्केट का सर्वे करोगे कि भाई मुझे कौन से टाइप का मोबाइल लेना है, बराबर है ना, कौन से ब्रांड का मोबाइल लेना है. Afterward you will see the features, you will try to compare the products. Okay, so that's why there are some features. भाई इस पर्टिकुलर मोबाइल में ये पर्टिकुलर प्रोसेसर है, ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, ऑपरेटिंग स्पीड है, इतना आईओ डिवाइसेस है, इतना उसका साइज है, इतनी इसमें मेमोरी अवेलेबल है, राइट. तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप उसमें ऑब्जर्व करते हो. So in the same fashion, here I am going to teach you in that fashion. Okay, now we are going to learn, we are going to understand the 8085 microprocessor. Remember, in your life, whenever you are going to learn a processor or a controller, then its beginning is starts from its feature. Question, sir, why the beginning of any processor or controller is starting from features? Remember, ये यही नहीं मैं बता रहा हूं. ओके, अगर आप कोई डायोड
या ट्रांजिस्टर या कोई एखादे एलिमेंट की अगर बात करोगे तो भी आप वहां पर पहले उसका डाटा शीट ऑब्जर्व करते हो। डेटा शीट्स वहां पर आपको इंफॉर्मेशन बताता है कि ये पर्टिकुलर जो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये कितने वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है, इसमें कितना ब्रेकअप पॉइंट होता है, इसमें क्या आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत रहेगी। ओके, तो ये डिटेल्स वहां पर्टिकुलरली डेटा शीट्स में आपको प्रोवाइड किए रहते हैं। सो इन द सेम फैशन, whenever you are going to learn about the processor or controller, the feature of that controller or processors are important. So here in front of you in the slide, I have listed few features. Okay, so these features are telling you the idea about the 8085, and you will understand, you will know that what things are present with the processor. Okay, so here first feature of the microprocessor 8085 is it is a 8-bit microprocessor. Okay, as I told you about the 8085 microprocessor, in that the third number, that 8, is a 8-bit microprocessor. Okay, it is a 8-bit microprocessor. Okay, and it is manufactured by Intel Corporation. Okay, now you know about the bit and byte difference. Okay, you heard about the logic 0 and logic 1. Okay, so logic 0 and logic 1 are called 2-bit. Okay, are the 2-bit. Okay, so 0 and 1 is a bits. Okay, so that's why these bits are merged. So that's why whenever we merge 4 bits, we will say what? It is a nibble. When we merge 8 bits, then it results a byte. When we merge 16-bit at a time, it results a word. W-O-R-D, one word. Okay, similarly when we merge 32-bit, then it is called double word. Double, W-O-R-D, double word. Got my point? ध्यान में रखो, आपको बीट, निबल, बाइट, वर्ड का डिफरेंस पता रहना चाहिए। बिट किसे कहेंगे? 1 और 0 को। निबल किसे कहेंगे? 4 बिट के ग्रुप को। बाइट किसे कहेंगे? 1 बाइट किसे कहेंगे? 8 बिट के ग्रुप को। वर्ड कब कहोगे? 1 वर्ड 16 बिट को। ओके, इन द सेम फैशन आपको याद रखना है। So here this microprocessor is capable of performing a 8-bit operation because it is a 8-bit microprocessor. Means as it is a 8-bit microprocessor, means it has a capability to carry out the operation of 8-bit arithmetic and logic also. See the feature number 10 here, operation are also highlighted. Okay, means जो फीचर नंबर 1 है उसी से रिलेटेड फीचर नंबर 10 भी है। 10 क्या कहता है यहाँ पर? इट इज कैपेबल टू परफॉर्म अ 8-bit बाइनरी एडिशन with and without carry. Okay, I will tell you everything. What is carry? Okay, with carry or without carry. Okay, ये सारी बात में मैं आपको क्लियर करूंगा. Now at this moment understand, here it is a 8-bit binary addition. It is capable to perform a 16-bit binary addition. How it performs, that I tell you. Then it is capable of doing 2-digit binary coded decimal arithmetic operation. Then again it is capable of performing a 8-bit subtraction. Then it is capable to perform a 8-bit logical and or not and XOR operation. Okay, so these are the different kind of operations are possible with the help of a 8-bit microprocessor. Now second feature is it has 40 pin. This IC
is available in dual in line package. देखिए यह जो आईसी है, ये आईसी को टोटल 40 टर्मिनल्स रहेंगे, 40 पिंस का आईसी रहेगा। अगर आपने डिजिटल आईसी देखा है तो डिजिटल आईसी में मोस्टली 12 पिंस, 14 पिंस, 16 पिंस, 24 पिंस के आईसी वहां पर अवेलेबल रहते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर यह आईसी फाइंड करेंगे कि भाई ये आईसी 40 पिन का आईसी है। ओके, अभी पैकेजेस की बात कैसा है कि जो आईसी है, तो आईसी आपके सामने यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, वह जो आईसी है उसका जो पैकेज है उसे कहा जाता है ड्यूल इन लाइन पैकेज। क्यों? क्योंकि उसको दो साइड से टर्मिनल अवेलेबल होती है। ओके, उसे दो साइड से टर्मिनल अवेलेबल होती है। अगर हम SIP कहते हैं, सिंगल इन लाइन पैकेज, तो उसे एक ही लाइन, एक ही साइड से उसे टर्मिनल प्रेजेंट रहेगी। ओके, तो इस वजह से उसे सिप कहा जाता है या इसे डिप कहा जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ चारों साइड से उसे टर्मिनल अगर फाइंड करूंगा तो मैं उसे क्या कहूंगा, तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेचर इन लाइन पैकेज, QIP। गॉट माय पॉइंट? तो उसे क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेचर इन लाइन पैकेज, राइट। Get the idea about the packages. There are three kind of packages: single inline package, dual inline package and quadrature inline package. Single inline package में एक ही साइड से टर्मिनल प्रेजेंट रहती है, ड्यूल इनलाइन पैकेज में दो साइड से टर्मिनल प्रेजेंट रहती है, क्वाड्रेचर इनलाइन पैकेज में चारों साइड से आपको उसमें टर्मिनल प्रेजेंट रहती है। गॉट द आइडिया? समझा कि नहीं? गॉट एवरीवन? ओके। Now, third feature is single plus 5 volt power supply is required. Okay, इसे इस आईसी को ऑपरेट होने के लिए प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, राइट। इट हैज 8 डेटा लाइंस लाइक D0 to D7. ओके, इसे यहाँ टोटल 8 डेटा लाइंस प्रेजेंट रहती है इस आईसी में। ओके, जैसा 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, उसी तरह यहाँ पर 8 ही डाटा लाइन प्रेजेंट है। जब आप यहाँ पर इस डाटा लाइंस का यूज करोगे तो ये डाटा लाइंस आपको बाय डायरेक्शनल दिखाई देगी और उनको नंबर दिए रहेंगे D0 से लेकर D7। ओके, तो डेटा लाइंस यहाँ पर कुछ इस तरह रहेगी। देन इस आईसी में टोटल 16 एड्रेस लाइंस है। ओके, एड्रेस लाइंस आर what yesterday I told you, address lines are unidirectional, data lines are bidirectional। तो 16 एड्रेस लाइंस है, उनके नंबर भी दिए हैं, उनको नाम दिए हैं A0 से लेकर A15 तक, टोटल कुल मिलाकर होंगे 16 लाइन। सिमिलरली डाटा लाइंस को नाम क्या दिए हैं, D0 से लेकर D7 तक। गॉट इट? एनी डाउट? गेटिंग एवरीवन? Okay. Now, next feature is it can access 2:16, means 64 KB kilobyte memory, that is memory interfacing capability. अगर आप यहाँ डाटा लाइंस का यूज देखोगे, एड्रेस लाइंस का यूज देखोगे, तो यूज जो है वह है डाटा बोले तो डेटा का ट्रांसफर, एड्रेस बोले तो एड्रेस का ट्रांसफर। तो एड्रेस जब एड्रेस का ट्रांसफर, एड्रेस लाइन जब एड्रेस का ट्रांसफर करेगी तो एड्रेसेस ज्यादा होते हैं, एड्रेसेस ज्यादा होते हैं और उसके साथ वहां पर उसकी इंटरफेसिंग कैपेबिलिटी मेमोरी के साथ काउंट की जाती है। तो एड्रेस लाइंस जनरली इंटरफेस होते हैं वहां मेमोरीज के साथ। तो एक मेमोरीज जनरली प्रोसेसर के साथ इंटरफेस होती है, ये एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं इनको हम, जैसे रैम, रोम, उसे उसी तरह यहाँ हम वह मेमोरीज हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होगा कि वो मेमोरी कितनी साइज की रहेगी, वो मेमोरी को कितने साइज की मेमोरी को मैं मेरे माइक्रो प्रोसेसर को इंटरफेस कर सकता हूँ।
आपने अभी तक ज्यादा मेमोरी देखी है, आपके मोबाइल में देखिए, आपने वहां नाम सुना होगा, 1 GB का मेमोरी है, 2 GB का मेमोरी है, 4 GB का मेमोरी है, या 8 GB कार्ड है, या 16 GB, 32 GB। अब तो ये सुनने को बहुत कम मिलता है। ओके, अभी तो पेन ड्राइव 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB के आपको वहां पर पेन ड्राइव्स प्रेजेंट है। उसी तरह मेमोरी कार्ड भी है, 32 GB का है, 64 GB का है, 128 GB का है, 256 GB का मेमोरी कार्ड है। तो वो मेमोरी कार्ड आप इंटरफेस कर सकते हो। अब क्वेश्चन अराइज होगा, भाई मेरे माइक्रो प्रोसेसर में यहाँ पर मैं कितनी मेमोरी इंटरफेस कर सकता हूँ। तो सवाल यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होगा कि सर वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा और उसकी साइज कितनी रहेगी। रिमेंबर, the memory interfacing capacity is totally dependent on the address lines which are available in the processor। जो प्रोसेसर आपके पास है उसमें कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस है? 16 एड्रेस लाइंस, यानी 2:16। अब क्वेश्चन अराइज होगा, सर 2 क्यों लिया भैया? 2 क्यों लिया? 2:16 ही क्यों लिया? 2 इसलिए लिया है क्योंकि यह बाइनरी बाइनरी नंबर्स के ऊपर ऑपरेट होती है एड्रेस लाइंस। सो दैट्स व्हाई बाय बाय बोले तो 2, इस वजह से यहाँ पर 2:16 कन्वेंशन यहाँ पर लिया गया है। तो 2:16 अगर आप काउंट करोगे तो वह आएगा 64 केबी, यानी 65,536। यह डेसिमल नंबर में आएगा, उसको क्लब करके अपने को रहेगा 64 केबी, यानी किलोबाइट की मेमोरी। गॉट द पॉइंट? समझा कि नहीं? हाँ बोलने का, राइट। इसी फैशन में अब हमारी मेमोरी की बात हो गई। अब जहां मेमोरी है तो मेमोरी स्टोरेज आपका वहां आ गया, मेमोरी में डाटा आपका आ गया। अब बात करते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। हम हमारे प्रोसेसर, हमारे मोबाइल के साथ कितने आईओ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं? आपके मोबाइल के साथ बोला, बताओ बोला, कितने में आईओ डिवाइसेस कनेक्ट करते हो आप? एक ने बोला, सर मैं यहाँ पर माइक कनेक्ट करता हूँ, यानी हमारा हेडफोन कनेक्ट करता हूँ। दूसरा पावर कॉर्ड हो गई, ठीक है। तीसरा खत्म है आपके पास? ओके है तो लिस्ट होगा। ओके, बट नाउ रिमेंबर, हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बड़ी लंबी लिस्ट रहती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं हमारा कीपैड, एलईडी, एलसीडी, 7 सेगमेंट, सिमिलरली बड़ा कीपैड, ओके, सेंसर्स, बहुत सारे टाइप्स के सेंसर्स। ओके, तो वो अगर आपको इंटरफेस करने हैं तो क्वेश्चन आ रहा है, सर मैं कनेक्ट कहाँ करूं, कनेक्शंस कहाँ होगा? क्वेश्चन पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने डिवाइसेस बताए ये क्या ऑपरेशन करते हैं? रिमेंबर, आंसर रहेगा ये हमारे पास से डाटा लेते हैं या हमें डाटा देते हैं। बराबर है। अगर वो मेरे पास से डाटा लेते हैं या देते हैं तो मैं उसे डेटा लाइंस के साथ कनेक्ट करूंगा ना भाई, क्योंकि वो डेटा को शेयर करेंगे ना। सो दैट्स व्हाई कहां पर इंटरफेस होगा उसका? डेटा लाइंस के साथ। तो डेटा लाइंस के साथ इंटरफेस करने के लिए हम यहाँ डेटा लाइंस का यूज करेंगे। कितने डेटा लाइंस है हमारे पास? टोटल कुल मिलाकर 8 डेटा लाइंस है। सो दैट्स व्हाई 8 डेटा लाइंस होने की वजह से 7 नंबर का पॉइंट आप पढ़ोगे, इट प्रोवाइड्स 8 बिट IO इनपुट आउटपुट एड्रेस टू इंटरफेस 2:8। 2:8 क्यों? यहाँ बाइनरी ऑपरेशन हम उसके द्वारा कैरी आउट करेंगे। सो दैट्स व्हाई 2:8 यानी 256 IO डिवाइसेस का इंटरफेस होगा। गॉट द पॉइंट? समझ में आई? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखते हैं 8 नंबर का फीचर। इट हैज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज इज बिटवीन 500 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। अब आप ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर को ऑपरेट करना है, यूज करना है
तो यूज करते समय मैंने कहा कि इसको क्लॉक लगेगा, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी लगेगी, बराबर है ना। क्लॉक है तो क्लॉक का ड्यूरेशन है ऑन और ऑफ, तो वो ड्यूरेशन यहाँ पर टाइम पीरियड टी बताता है। टी इज नथिंग बट इज इक्वल टू 1/f या f इज इक्वल टू 1/t। सो दैट्स व्हाई f is given in terms of frequency, that is 500 kilohertz to 3 megahertz। यानी आपको जो क्लॉक सिग्नल लगाने का है वो क्लॉक सिग्नल आप यहाँ पर इस रेंज का फ्रीक्वेंसी यूज करोगे। क्वेश्चन, सर ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोसेसर के लिए फिक्स होती है क्या? यस, इट इज अ डेविएटेड फ्रीक्वेंसी रेंज। डेविएटेड यानी इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी। आपको यहाँ 3 मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम बताया, 500 किलोहर्ट्ज मिनिमम बताया। इन दोनों में आप कोई भी फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल कनेक्ट कर सकते हो आपके प्रोसेसर के साथ, और वह क्रिस्टल के फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा जो प्रोसेसर है वह ऑपरेट होता है। सो दैट्स व्हाई, इस वजह से उसे कहा गया है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज। गॉट माय पॉइंट? कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट आता है 9th नंबर का। इट हैज 74 इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। यानी आप इस प्रोसेसर को यूज कर सकते हो। क्वेश्चन, उसे कह सकते हो भाई ऐड, उसे कह सकते हो सब्ट्रैक्शन, उसे कह सकते हो डाटा इन, उसे कह सकते हो डाटा आउट। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि ये क्या है। अगर मैंने कहा भाई ऐड, सब्ट्रैक्ट, डाटा इन या डाटा आउट, ये हो गया इंस्ट्रक्शन। अब क्वेश्चन है सर कितने इंस्ट्रक्शन है? यह कुल मिलाकर इस प्रोसेसर को 74 इंस्ट्रक्शंस है। उस इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हम अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? समझ में आया ना? गेटिंग एवरीवन? पॉइंट नंबर 10 तो देख लिया, 11 के ऊपर जाते हैं। इट कैन परफॉर्म सीरियल एज वेल एज पैरेलल डेटा ट्रांसफर। अच्छा, अभी याद रखिए, हम इस प्रोसेसर का यूज कर सकते हैं जब हम यहाँ इस प्रोसेसर को एक्सटर्नल पेरिफेरल के द्वारा डाटा का ट्रांसफर करेंगे। तो डाटा का ट्रांसफर आप दो वे से कर सकते हो, टू वे से कर सकते हो। पहला है सीरियली, आप एक सिंगल लाइन के द्वारा उसको डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। एक सिंगल लाइन को यूज करो, एक सिंगल कंडक्टिंग वायर को यूज करो, और सिंगल कंडक्टिंग वायर के द्वारा आप डाटा का ट्रांसफर करो। अगर आपको लगा भाई सिंगल कंडक्टिंग वायर की जगह, सीरियल कम्युनिकेशन की जगह मैं पैरेलल कम्युनिकेशन करूंगा, क्वेश्चन आ रहा होगा सर पैरेलल कम्युनिकेशन में कितने लाइंस लगेंगे, कितने कंडक्टर लाइन लगेंगे? तो आंसर रहेगा हमारे पास कितने डाटा लाइंस प्रेजेंट हैं? टोटल कुल मिलाकर 8 डाटा लाइंस है। 8 डाटा लाइंस आर नथिंग बट 8 कंडक्टिंग वायर। सो दैट्स व्हाई यह 8 कंडक्टिंग वायर्स यानी 8 डेटा लाइंस आपको अलाउ करेंगे टू ट्रांसफर ऑफ डाटा इन पैरेलल फैशन। पैरेलल क्यों कहा गया? क्योंकि एक की जगह वहां पर 8 लाइन से, वो 8 लाइंस के द्वारा एट अ टाइम 8 बिट का डाटा ट्रांसफर होगा। सो क्वेश्चन अराइज होगा भाई विच वन इज फास्टेस्ट? सीरियल कम्युनिकेशन इज फास्टेस्ट और पैरेलल कम्युनिकेशन इज फास्टेस्ट? ढूंढ के रखो इसका जवाब। ओके, तब तक और पॉइंट यहां पर लिखते हैं। पॉइंट नंबर 12 है इट हैज 5 हार्डवेयर इंटरप्ट एंड 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हमारे पास यहां पर इंटरप्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। क्वेश्चन, सर व्हाट इज मीन बाय इंटरप्ट? रिमेंबर, अगर मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं और आपको पढ़ाते पढ़ाते आप घर में बैठे हो और आपको बेल सुनाई दी डोर की, डोर की जो बेल सुनाई दी यानी डोर के ऊपर कोई आया है और वह रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मैं यहाँ बाहर खड़ा हूं, क्या आप डोर ओपन करोगे? लेकिन आप तो लेक्चर ले रहे हो ना मेरा, तो आपको वो बेल है, तो बेल जो सुनाई दे रही है वह है इंटरप्ट। मीन्स ध्यान देना, ध्यान में रखना, इंटरप्ट इज नथिंग बट अ रिक्वेस्ट। व्हाट आई सेड, interrupt is nothing but a request. That request may be coming from hardware or that request may be coming from software. So that's why there are hardware interrupt and software interrupt.
कितने इंटरप्ट है हार्डवेयर? हार्डवेयर है 5 और सॉफ्टवेयर है 8। ओके, तो हार्डवेयर फिजिकली इंटरप्ट देखेंगे, हार्डवेयर इंटरप्ट आपको फिजिकली पिंस के द्वारा अवेलेबल होंगे। सॉफ्टवेयर जो इंटरप्ट है वो इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में रहेंगे, याद रखो। हार्डवेयर इंटरप्ट आपको एक पर्टिकुलर पिंस के द्वारा, कंडक्टिंग वायर के द्वारा अवेलेबल होगा, उसके द्वारा आप कम्युनिकेशन करोगे। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट यहाँ पर दिखाई देगा नहीं, वह इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो अभी उनके नाम यहां बताता हूं, बाद में काम डिस्कस करेंगे। तो हार्डवेयर इंटरप्ट में आता है टीआरएपी, ट्रैप कहेंगे उसे, आरएसटी 7.5, आरएसटी 6.5, आरएसटी 5.5 एंड आईएनटीआर। ये 5 प्रकार के इंटरप्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो टोटल कुल मिलाकर आपको हार्डवेयर इंटरप्ट 5 रहेंगे और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट रहेंगे आरएसटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हार्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट रहेंगे। गेटिंग एवरीवन? ओके, हाँ। अब यहां पर लास्ट पॉइंट देखते हैं। इट हैज 1 एक्यूमुलेटर, 1 फ्लैग रजिस्टर, 6 जनरल पर्पज रजिस्टर एंड 2 स्पेशल पर्पज रजिस्टर। ओके, तो ये स्पेशलिटी है इस 8085 की। तो ये क्या है पॉइंट, मैं आगे ब्लॉक डायग्राम में उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग द फीचर्स। ओके, अगर आपको फीचर्स यहाँ पर नहीं समझते हैं, डोंट बॉदर अबाउट इट, कि भाई यहाँ पैनिक नहीं होना है आपको कि भाई सर मुझे फीचर्स नहीं समझा। डोंट वरी, ये सारे फीचर्स में एक एक करके अभी ब्लॉक डायग्राम आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में जाकर उसे समझा रहा हूं। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे और उसके साथ साथ उसे यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो टिल देन we will end up our lecture, we will see it in the next one. So आपको एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को आपको कमेंट करना है आपके रोल नंबर और नाम के साथ, यानी आपकी अटेंडेंस वहां मैं ऐड कर सकूं। गेटिंग एवरीवन? और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए आपके फ्रेंड्स के साथ, यानी वो भी इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। ओके, और उनको भी थोड़ा ज्यादा एडिशनल नॉलेज मिल सकेगा। गेटिंग एवरीवन? सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन सी यू।